12 मार्च आईआईटी गुवाहाटी बायोनेस्ट के स्टार्टअप एग्जीबिशन में फायरसाइड चैट के लिए हाजिर थे मिस्टर अभिनव कुमार। उनके साथ बातचीत के कुछ झलकियां प्रस्तुत है आपके लिए। तो हमने तो वो देखा जो टीवी पे आ रहा था। इनसाइड स्टोरी क्या थी, मतलब आपने कैसे इतना बोरिंग ऐड बनाया और वो इतना हिट हो गया? हाँ, मैंने वही जो पिछली बार भी बोला कि हम लोग ने एड के परफॉर्मेंस को देखा और मैं रिस्पॉन्सिबल था मीडिया बाइंग के लिए भी, तो हम लोग मीडिया बाइंग भी किस तरीके से करते थे। और पहले ऐड पे आता हूँ कि हमने ये बनाया कैसे। हमने बहुत कोशिश की, मतलब कि कोई मुझे मॉडल मिल जाए, और बहुत लोगों के साथ कास्टिंग भी किया इंडिया में। लेकिन इंडिया में एक इशू है मेल मॉडल्स के साथ कि वो जितने मेल मॉडल्स आपको मिलेंगे वो सब लग रहा है कि आप प्रोटीन पाउडर का ऐड करना चाह रहे हैं, तो सारे मेल मॉडल्स वैसे होते थे। और हमने बोला कि प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई स्टार या फिर कोई हीरो नहीं चाहिए। मतलब कि फिर आपके प्रोडक्ट से फोकस उठ करके उस यहाँ पे भी चला गया था थोड़ा, प्रोडक्ट से ज्यादा लोग प्रोडक्ट के अंदर वाले मॉडल के बारे में बात करके ये कौन है। लेकिन हम चाहते थे कि वो फोकस पूरा प्रोडक्ट के ऊपर है, तो मुझे एक सिंपल सा इंडियन बंदा चाहिए था, इंडिया, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, जिसको क्या बताना कि बहुत ट्रिकी नहीं है ये टूल। बस अपने होटल का नाम, अपने शहर का नाम डालिए जहाँ पे आपको होटल चाहिए, डेट चेक करिए और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इतना सिंपल था। तो इसको बताने के लिए कोई सुपरस्टार नहीं चाहिए था, एक सिंपल सा एक इंडियन बंदा चाहिए था। हमने बहुत कास्टिंग की, लेकिन फिर भी हम अभी तक सिलेक्शन नहीं कर पाए थे। तो जो मार्केटिंग हेड थे वो गुस्सा हो गया, फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेते जब तुमको इतना चॉइस और इतने इश्यूज हैं तुम्हें मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो हमने ये टेस्ट में एक्चुअली किया था, और मेरी मूछें इसलिए बढ़ी हुई हैं कि वो नवंबर का महीना था जब हम शूट कर रहे थे। तो ये नवंबर के महीने में उस मंथ को ग्लोबली हम मनाते हैं मोवेम्बर के नाम से, जिसमें कि मेल टेस्टिकुलर कैंसर के लिए अवेयरनेस और इसके लिए होता है, तो लोग अपनी मूछें उगाते हैं। तो मैं वैसे ही एक दूसरे कंपटीशन के लिए कितना लंबा मूछ हो सकता है, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था। और नवंबर खत्म नहीं हुआ था तो मैं शेव नहीं करता था, कभी जज नहीं हुआ था कि किसको ये अवार्ड मिल रहा है, और हम फंड रेज करते हैं उसके लिए। तो मुझे बोला गया था कि सेट पे जाकर के कोई तो वहां पर मेरे हेयर स्टाइल और दाढ़ी और मूंछों को देखेगा, मतलब उसको सही किया जाएगा। लेकिन बाद में डायरेक्टर ने बोला कि हमने 1-2 लाइन रिकॉर्ड कर लिया है, अब कंटिन्यूटी के लिए ऐसा ही रहने दो। और फिर वो उसी तरीके से आ गया। मेरे ख्याल से वो भी एक फॉर्चुनेट एक्सीडेंट था कि उसके चलते ही डिस्कशन हुआ। शायद मैं उधर बहुत अच्छा दिखता रहता तो शायद आज हम ये ऐड को डिस्कस नहीं करते होते। और वो हमको फिर दिख गया, फिर हमारा जो टीवी मेजरमेंट का तरीका था वो दिख रहा था कि ये क्यूरोसिटी ला रहा है लोगों में। और जब हम ऐड चलाते थे तो हमको डायरेक्टली हमारे पूरे इसके अंदर में ट्रैफिक में, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में हमको ग्रोथ दिखता था डायरेक्टली कि बहुत सारे लोग हमको विजिट करने आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते गए। मल्टीप्लाई इस तरीके से किया कि त्रिवागो का ट्रैफिक, त्रिवागो खास करके त्रिवागो इंडिया का ट्रैफिक मैंने देखा है कि फर्स्ट दिन वेबसाइट लाइव गया तो 21 विजिट्स थे, ऐसे रैंडम, शायद आधे ऑर्गेनिक विजिट्स होंगे। और जब तक मैं था, जब तक छोड़ रहा था, ऑलमोस्ट 11 मिलियन का ट्रैफिक हमारे पास इंडिया से डायरेक्टली आ रहा था। स्टार्टअप, तो ये तो बहुत बड़ी रेंज है। How did you do it? What is the thing that remained which is constant in all these new ventures? एक बस वो करेक्शन, मैं इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट देख रहा था। अमेरिकन एड जब हम प्लान कर रहे थे, मैं उस टाइम इन्वॉल्व था ट्रावो में। पहला स्क्रिप्ट लिखने में था जिसमें मैं एक्टर नहीं था, हमने किसी और को कास्ट किया था अमेरिकन एड के लिए। वो भी आप ही की तरह था? हाँ, वो भी स्टोरी है कि हमने जानबूझ करके ऐसे एड्स क्यों बनाए, और ऐसे एड्स बनाए तो आज लोगों को याद है कि हमने ऐसे एड्स बनाए। उसका थोड़ा सा स्टोरी है कि ये जब एड्स हम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो नॉर्मली मार्केटिंग के लिए हम बैठे थे, और जब स्टोरीज लिख रहे थे तो हमारा जो बॉस था वो जर्मन था। और जर्मन बिल्कुल फंक्शनल होते हैं कि काम क्या करना है और कैसे डिलीवर करना है। तो जो भी फीचर्स हैं प्रोडक्ट के वो उसने लाइन बाय लाइन लिख दिया। अब बोला ये सब बोलना है, लेकिन हम जितने एड्स बनाते हैं या एड्स हम देखते हैं, हम उसमें कुछ और कुछ स्टोरी लाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन वो बोला कि बस ये सब फंक्शन है वेबसाइट के और ये हमको बताना है सारे लोगों को टीवी पे। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि यही हमारा फीचर है, यही बताना है। तो सबसे पहले वो जो अमेरिकन बंदा था वो एक्चुअली हमारा वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, जिसको कि हम अमेरिकन एड्स के लिए एनिमेटेड एड्स में उसका वॉइस यूज करते थे। उस समय एआई नहीं था तो हमको फिर भी वॉइस रिकॉर्ड करने पड़ते थे। तो हमने उसके साथ वैसे ही ट्रायल लिया, और एक्सीडेंटली वो भी बहुत वायरल गया था, जो अमेरिकन त्रिवागो का जो बंदा था। क्योंकि जब उसके साथ हम आज शूट करने के लिए गए तो हम पूरे प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो स्टूडियो में जो शर्ट पड़ा था, जो पैंट पड़े थे, वो उसको दे दिया था। तो शर्ट का बटन टूटा था ऊपर से 2, पैंट उसको ढीला हो रहा था, बेल्ट नहीं मिल रहा था हमको। तो हमने बोला ऐसे शूट करके देखते हैं, फिर देखा जाएगा क्या करेंगे।
तो वो एड भी वायरल चला गया। लोग बोले कि कोई होमलेस बंदे को ला करके इसको तो पक्का होटल चाहिए, तो लोग उसको उससे रिलेट कर लिए कि इसको घर से निकाल दिया गया है और इसको होटल पक्का चाहिए। और तो उसी तरीके से वो तो बाद में फीचर भी हुआ, रोलिंग स्टोन मैगजीन पे वो मेन मॉडल था। लेकिन जब एक बार हमने इंडिया में ऐड किया तो मैंने लीड लिया, क्योंकि एसईओ टर्म्स और जो इंटरनेट के टर्म्स हैं उसको भी त्रिवागो गाय बोला जाता था, मुझे भी त्रिवागो गाय बोला जाता था। तो सर्च बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इंडिया में ज्यादा है यूएस के कंपेयर, तो बाद में फिर मैंने ओवरटेक कर लिया। तो अभी भी आप सर्च करेंगे त्रिवागो गाय, डिपेंड करता है कि अगर आपका ज्यादा ही इंडियन सर्च रहा है तो मैं ज्यादा दिखूंगा, लेकिन अगर आप कहीं बाहर से जाके सर्च करेंगे तो हम लोग दोनों दिखेंगे उसके अंदर में। और You said that TV was treated as a branding black box. So and you, आपने बोला that you spend and pray. So but you refuse to accept that. But what actually किया क्या आपने? You know, what actually did you do? Yeah, so it was more about measuring TV, which is very much absent from, even right now, I think most of the brands which spends on TV, they have no idea exactly how they are spending. Most of the brands spending right now, they're spending on the advisory of the media agencies. And media agencies, so India has a very large bouquet of channels, so probably if you see right now, there would be more than 500 to 600 channels, pan-India. But then if you go to any agency and ask for marketing, they will give you 35 to 40 channels to buy from. Because then rest, because the way we do the TV measurement, rest even doesn't get any number. So their TV ratings are 0. Like channels like MTV, maybe let's say talk about 10 years ago, MTV we were watching music and everything, but MTV had a rating of like 0. How, like there are people watching, we know people who watched MTV, we were following these RJs and DJs and yeah. But then how to comprehend this, that there are 600 channels, I'm sure they are making somehow money and they are live there, and I could find audience there. So we derived our own way how to measure TV. When you could suddenly show which ad to come, you know, let's say at prime time, let's pick prime time. And how did it just drove all the visitor traffic? Yeah, so again, then we were not specific about prime time. We will run throughout the day. We will also buy ads in the midnight when nobody else is buying, because we knew the traffic is coming even in midnight. You don't know if somebody is working late and then probably watching TV and then doing something on his computer, and then he sees the ad and he goes and visits. We can capture that visit, and then we know that nobody is buying. So some TV channels will give those spots for free, and we will take it shamelessly. We will take those because we saw traffic coming from there. So we'll say, okay, anyhow, we will do our own division. So we will put these pricing throughout the day. So give me a rate that what you will charge me for the day, and this is how we will take the slots. And so we could understand each hour how much of traffic is coming, and then so it was much more easier to make this decision. So this is here, we also had an internal philosophy where we called power of proof. So it is not just me being emotional that because I'm being featured in the ad, so this ad has to run. No, the data has to answer for it, and if the ads are doing good, bringing traffic, yes, then the ads will continue. Then I can also not stop it because then they were delivering results. So what's the most common mistake, you know, marketing mistake I would say, which you see repeatedly done by, let's say, startups? Yeah, I think I will address the points mostly related to marketing actually. So one of the biggest thing, if a startup gets funded, the big ones, maybe the fintech ones, the ones which are making names in Delhi, Bombay and everything, they get money and then they want to blow it up on TV, even in the big consumer apps, and they're not sure about why they want to advertise in the first place. Sometimes the product is not ready for the masses, and then they will take emotional decisions like, oh, let's go and take our ads on, let's say, KBC, because Amitabh Bachchan is there. If my ads, they're coming on those platforms, then it will be seen by the whole country. Yes, it will be seen by the country, but are you ready? And are you prepared that what kind of audience you will get? Are you ready to serve them? And so this is one of the biggest mistakes I have seen for some established startups which have blown up the money on. One example, I mean, if you can. But I cannot. Without naming the company. Yeah. So because I keep consulting, so there are. Does it deliver? And so there are people making mistakes and then going too early into marketing when you're not ready. So these are some of the mistakes and emotional mistakes people do. So always do marketing when you can measure it. If you cannot measure any kind of marketing, don't do it on an emotional basis. Just because everyone else is doing, you should also do it. No. Most of the companies, they don't know what they are doing, and we feel that, okay, let's copy our competitor because they are doing it, we should also do it. But you don't know, probably they also don't know why they are doing it. So always do the things which you can measure and you can understand. If you don't understand, just skip. The day you will understand, you can use it. But if you don't understand, don't try to use it. You know, I don't know how much time we have because we've
audience also they might have. So if you could go back and tell yourself one thing before you started your first marketing role, something that could have saved you, let's say, a lot of time. I think a lot of calculations and the decisions make the process was much more difficult. So I started with Trivago in 2012. The first ads with me, they were aired in 2016, and that time the kind of tech we had, so all the calculation I was running with Excel sheets. And so I get dyslexia when I see a lot of numbers, but anyhow I coped up. And now it has become much more easier to process these sheets and to get outcome out of them. So I think right now people have more tools. They are much more enabled than 10, 15 years ago. And so I just want you to tell, I mean, just since we have been visited the exhibition and first different deep tech products that I was especially, and you met a lot of founders also. One thing that you want to tell them, because they are at a stage, few of them, that they really need a lot of endorsements, and most of them they are at a stage where they're still making product. So at one point of time, of course. So one marketing advice that you want, looking at their what they actually do, kind of portfolio. I've seen some of them. They were interesting. There are much more useful than, again, mass consumer kind of a thing. But there were many which has a use in day-to-day life. And so for those, I will say that all of your products are very good. But try to figure out the way that how you can properly communicate your product to the audience, and understand your target group very good. So which are exactly the people you should reach out to, and if you can define your customer very well, then you have almost solved half of your marketing issue, and then you will be able to deliver it to the right audience. So don't try to market your product to everyone. It is much more easier to just do any kind of marketing, but be very sure what you are trying to build or what you are trying to sell. You have already understood the audience you are selling to, and half your marketing will be solved there. Yeah. And so I told you one thing that if you are not interested to visit Kamakhya, right? I will go up. But then I told him that there's a saying here that if you won't visit, you have to come here again, right? So okay, yeah. So we'll be expecting you soon. What I feel that our startups can take a lot of insights from your learnings and what you have in different organizations. Thanks again for coming, and we'll have a little gratitude for you.